Hello everybody. Our today's topic for discussion is time and work. This is one of the most important QA topics for all competitive exams like CAT, GMAT, SSC, IBPS or eLitmus. The basic principle which is required to be understood for time and work is output of a machine or a person is directly proportional to time. So अगर कोई इंसान या मशीन ज्यादा समय तक काम करेगा तो ज्यादा काम होगा एज कंपेयर टू अ मशीन और अ पर्सन जो कम समय काम करेगा तो कम काम होगा. सो वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टाइम. नाउ फॉर ease of calculation we consider the total amount of work to be equal to 1. So आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के then you should consider total amount of work as 1. This will help you solve the questions easily. Now this is one of the most important concepts, that if a person can complete a work in n number of days, then his one day's work is equal to 1 by n. तो अगर कोई इंसान किसी काम को खत्म करने में n number of days लेता है तो वो एक दिन में 1 by n amount of work करेगा. और इसका रिवर्स भी ट्रू है, which means if a person can complete 1 by n work in one day, then he can complete the whole work in inverse of one day's work, that is in n number of days. तो अगर कोई इंसान एक दिन में 1 by n amount of work कर रहा है तो उसे पूरा काम खत्म करने में n number of days लगेंगे, which is the inverse of one day's work, inverse of 1 by n. Now let's look at one more concept, that if one person takes a number of days to complete the work and another person takes b number of days to complete the same work, and if both of them working together complete the work in c number of days, then what is the relationship between a, b and c? तो अगर कोई इंसान किसी काम को खत्म करने में ए नंबर ऑफ डेज ले रहा है और दूसरा इंसान उसी काम को खत्म करने में बी नंबर ऑफ डेज ले रहा है, और अगर वो साथ में काम करते हैं तो पूरा काम सी नंबर ऑफ डेज में वो कंप्लीट करते हैं, तो ए बी सी में क्या रिलेशनशिप होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी विल नॉट बी इक्वल टू सी, राइट. हम ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो वो सी के इक्वल नहीं होगा. देन व्हाट इज द राइट इक्वेशन? इट इज 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by c. So amount of work done by first person in one day plus the amount of work done by second person in one day would be equal to the amount of work done by them together in one day. So 1 by A is the amount of work done by first person in one day. 1 by B is the amount of work done by second person in one day. So if we add both of them, this becomes equal to the amount of work which they do together in one day, which is 1 by C. So 1 by A plus 1 by B is equal to 1 by C is the right equation. Now let's look at some of the questions to understand these concepts better. So the first question is very simple. This is just to illustrate the concepts which we have learned. So A can do a job in 12 days and B can do the same job in 6 days. In how many days working together they can complete the job? सो ए को एक काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं, बी को सेम जॉब करने में 6 डेज लगते हैं. अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं? सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो इफ ए टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द जॉब, उसे वो एक दिन में 1/12 ऑफ द वर्क करेगा. सिमिलरली अगर बी को 6 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में 1/6 ऑफ द वर्क करेगा. अगर दोनों साथ में काम करें तो वो एक दिन में 1/12 प्लस 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, which means 1/12 plus 1/6. And if we solve this, the LCM of the denominators would be 12 and numerator would be 12 divided by 12 1 plus 12 divided by 6 2. So 1 plus 2 would be the numerator, which is equal to 3/12, which is equal to 1/4. So अगर दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो वो एक दिन में 1/4 of the work कर देंगे. So the amount of work which they will do together in one day is 1/4 of the total amount of work. So जैसा हमने पहले देखा था कि अगर कोई इंसान एक दिन में 1 by n amount of work कर रहा है तो उसे पूरा काम खत्म करने में n number of days लगते हैं. So applying the same concept here. So if they are doing 1/4 of the work in one day, which means they will complete the whole work in 4 days, which is the inverse of 1/4. So the right answer of this question would be C, 4 days.